नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आमर टॉपिक ऑफ कंसर्न माने जो जो टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करबा सेटा होचे न्यूरो नर्सिंग। ऑलरेडी तमे माने समस्त थंबनेल देखि जानि सकथिबो। आ नॉट ओनली आज हमें खाली एमसीक्यू सॉल्व करथुले हला किंतु हमें एबे एमसीक्यूज पूर्वरु किछि कटके शॉर्ट नोट्स शॉर्ट टिप्स शॉर्ट फैक्ट्स उडा को जहां सब हमर न्यूरो नर्सिंग सहित एसोसिएटेड हेइ रे अछि से सब को आगे टिके रिवीजन कर देबा तापरे हमें एमसीक्यू सॉल्व करबा जेमिति हमें यूजुअली एमसीक्यू सॉल्व करथुले एबे भी समिति करबा बट ता पूर्वरु टिके थ्योरी पोर्शन भी अछि हमर जा द्वारा कि हमर टिके रैपिड रिवीजन हि जिवो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमें जतबे एमसीक्यूज उडा सॉल्व करबा ताहले हमको माने जो रिवीजन ता हम पई बोली हेल्प करबो। ठीक अछि तो गुड आफ्टरनून एवरीवन चंदन मीना अनिता सुचिस्मिता प्रियांक गुड आफ्टरनून समस्त को। तो स्टार्ट करबा क्लास हला लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट रे हमें न्यूरो असेसमेंट एंड इमरजेंसीज ऊपर देखिबा जोडे कि हमर ग्लासगाव कोमा स्केल ऊपर देछि जीसीएस। ठीक अछि आई एम फाइन कार्टून थैंक यू आई एम फाइन। ठीक अछि रिजवाना गुड आफ्टरनून सैसी गुड मॉर्निंग आफ्टरनून गुड आफ्टरनून इप्सिता। ठीक अछि तो चलो देखो टिके टिके जस्ट देखि दमा हला अल्प टिके हमर रहिछि थ्योरी पोर्शन ता टिके कवर कर दबा रिवीजन टाइप रो कर दबा देन वी विल मूव ऑन टू द एमसीक्यू क्वेश्चन। करेक्ट देखो ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस एसएसएस आई ओपनिंग 4 वर्बल रिस्पांस 5 मोटर रिस्पांस 6 आई ओपनिंग 4 वर्बल रिस्पांस 5 मोटर रिस्पांस 6 मैक्सिमम होची 50 मिनिमम होची 3 हला ग्लासगो कोमा स्केल रे हमें ए मेजरमेंट रे हमें देखुची GCS जदि लेस देन इक्वल टू 8 अछि ताहाले सेटा जनरली इंडिकेट कोन करछि इंपेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड मेजर एयरवे प्रोटेक्शन कंसर्न हला रेस्पिरेटरी ऊपर हमरो अफेक्ट पकोछि। कशिंग ट्रायड जोडा रे कि हमर कोन कोन इंक्लूडेड रहउछि हाइपरटेंशन विथ वाइडेंड पल्स प्रेशर ब्रैडिकार्डिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन कोन कोन रहला तीनटा जिंस कशिंग ट्रायड भितरे हाइपरटेंशन ब्रैडिकार्डिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक which is a late sign of significantly increased intracranial pressure or ICP. Then next pupil assessment भितर कोन देखुचे ना a unilateral dilated poorly reactive pupil in a patient with deteriorating consciousness and can indicate uncanal herniation with compression of the CN cranial nerve 3 and requires immediate attention. हला pupil assessment भितर unilateral dilated reactive pupil कोन करबो deteriorating consciousness को से देखिबो जहा द्वारा कि हमें कोन देखुचे कि हमरा cranial nerve 3 रो compression देखा जाउछ हला। गुड आफ्टरनून समस्त को। नेक्स्ट नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन जोडा कि हमरो सीपीपी प्रेशर ता हला सेटा हमरो अराउंड 60 to 100 mm एच रहउची और सीपीपी को केमिति हमें मेजर कर परबा एमएपी माइनस आईसीपी हला एमएपी माइनस आईसीपी। मोनरो केली डॉक्ट्राइन ऊपर जदि हमें देखिबा सेटा कोन कहउची ना स्कल कंटेन्स 3 मेजर इंट्राक्रैनियल कंपोनेंट्स हला स्कल कंटेन्स 3 मेजर इंट्राक्रैनियल कंपोनेंट जोडे कि ब्रेन टिश्यू ब्लड आउ cerebrospinal fluid हमरो included रहउची आउ an increase in one component must initially be compensated by the reduction in another to prevent a rise in ICP एडा हला आ गोटे फैक्ट ता हमरो मोनरो केली डॉक्ट्राइन ऊपर आसुची। स्ट्रोक कोन एडा स्ट्रोक ऊपर हमरो टिके देखि दबा हला फास्ट जोडा कि हमरो रैपिड स्ट्रोक रिकॉग्निशन टूल ता FAST कोन कोन सेथरे हमरो इंक्लूडेड अछि फेस ड्रूपिंग आर्म वीकनेस speech difficulty time to seek emergency treatment एडा हला फास्ट स्ट्रोक। तापर ischemic stroke results from the interruption of the cerebral blood flow usually due to thrombosis or embolism. Hemorrhagic stroke कोन it results from the rupture of cerebral blood vessel brain रे blood vessel जदि rupture हि जाउची ताहाले सेडा हमर hemorrhagic stroke बोली कहवा जाउची जहा द्वारा कि bleeding होउची से जगह रे और around the brain रो चारि पटे मत bleeding हमरो देखा जाउची। Then next non-contrast CT head is an important initial imaging study is in suspected acute stroke because it rapidly helps to identify the intracranial hemorrhage. Non-contrast CT दा जोड़ा हमें कोड CT scan ता सेरा हमर intracranial hemorrhage देखिया पे बोली help. Left cerebral hemisphere dominant है for language in most of the people. तो dominant hemisphere lesion can produce aphasia speech difficulty हमर देखा जाय पारे जेतो लेफ्ट पोर्शन हमर स्पीच पे बोली रिस्पांसिबल तार हेमरेज हला कि ता सेठी किछ हमर माड बजे
अब स्पीच प्रॉब्लम देखा जाए ब्रोका एप्लेसिया स्पीच इज नॉन फ्लुएंट एंड एफर्टफुल while comprehension is relatively preserved. Renic aphasia, speech is typically fluent but impaired in meaning with impaired comprehension. Right cerebral hemisphere कहाँ पे है responsible? Right cerebral hemisphere lesion हमारा left sided neglect देखिए पर especially with right parietal involvement है ना right parietal involvement yes inability to speak aphasia. Next अब ऐसा spinal cord ऊपर है spinal cord और neurological syndromes उड़ा रहा है ना कौन syndromes अच्छे से related upper motor neuron lesion जब हो it causes spasticity hyperreflexia increased tone and positive Babinski response positive Babinski response को केस रे जतबे upper motor neuron रे lesion देखा जाउछ lower motor neuron lesion रे typically causes flaccidity muscle atrophy fasciculations and hyperreflexia or areflexia एटा हमरा देखा जाउछ केबे lower motor response neuron रे lesion जो Spinal shock refers to the temporary loss or suppression of the reflexes and motor or autonomic function below an acute spinal cord injury. Next, neurogenic shock, जोड़ा की result कौन होती loss of sympathetic vascular tone after certain spinal cord injuries and classically presents with hypotension and relative bradycardia. Autonomic dysreflexia, एटा कौन? It is a potentially life-threatening emergency in patient जहाँ की spinal cord injury देखा जाउची usually at the thoracic 6 thoracic 6 ऊपर को जदी हमर रहुची सेटा हम स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हमर इंडिकेट करछ ट्रिगरिंग कोन एटा ब्लैडर डिस्टेंशन आउ बोल इन्फेक्शन माने pelvic muscles रो टिके प्रॉब्लम एडी देखाइ छै typical manifestation of the autonomic dysreflexia includes sudden severe hypertension headache flushing or sweating above the lesion and vasodilation or pallor below the lesion. Next, neurological disorders cerebrospinal cord injury disorders से जाइतिला एबे न्यूरोलॉजिकल भीतर पार्किंसंस आसुची जोडा रे कि हमर कोन इंक्लूड होची डीजेनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जहा द्वारा कि सब्सटेंशिया निग्रा हमर सब्सटेंशिया निग्रा रे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स उडा सब अफेक्ट हो जाउची जहा द्वारा कि ब्राडिकाइनेसिया रिजिडिटी रेस्टिंग ट्रेमर और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी देखा जाए myasthenia gravis is a disorder of the neuromuscular transmission most commonly involving antibodies antibody देखा होची against the post synaptic acetylcholine receptor and weakness ए जगह रे वर्सन कर दोची एक्टिविटी को आउ इंप्रूव करूची आमी जदी रेस्ट करबा ताहले सेटा इंप्रूव करबो आउ जदी सेटा हमर वर्सन हे केते बेले हे जबो जते बेले हमर वीकनेस ता सहित एसोसिएटेड हे जबो जदी किछि एक्टिविटी हमें एसोसिएट करछु सेटा माइस्थेनिया गुड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नेक्स्ट निजर ही एंटीबॉडीज निजर ही न्यूरोनल सेल्स को डिजेनरेट करिया आरंभ करती myasthenic crisis involves severe worsening of the muscle weakness myasthenic crisis चा होची एडा हमर न्यूरोनल डिजेनरेशन ना एडा myasthenic crisis रे हमर मसल्स रो वीकनेस देखा जाउची विथ पोटेंशियली रेस्पिरेटरी फेलियर मध्ये एसोसिएट हे रहउची आउ रेस्पिरेटरी असेसमेंट ता अर्जेंटली रिक्वायर्ड रहउची यस नेक्स्ट Guillain-Barré syndrome (GBS) commonly causes progressive, relatively symmetrical ascending weakness with reduced or absent reflexes. Reflex ता हमर खराब हे जाउची ता संगे respiratory function must be closely monitored. Multiple sclerosis जोड़ा गोटे chronic inflammatory demyelinating disease ता CNS central nervous system रो जहार की neurological deficit disseminated in time and space. Next, Huntington disease जोड़ा गोटे inherited neurodegenerative disease ता inherited neurodegenerative disease characterized by chorea, cognitive decline and psychiatric or behavioral changes. Trigeminal neuralgia causes recurrent episodes of severe, brief, electric shock-like facial pain along with one or more divisions of the cranial nerve 5. है ना? ठीक है जी. Yes. Ascending paralysis is seen. Yes, cartoon ठीक है जी. मनोज, good afternoon. Good afternoon. अच्छा. तो cranial nerve विषय देखि दबा कौन cranial nerve विषय कौन देखिया रहो छी? Cranial nerve 2 हैला optic memory. Cranial nerve 3 हैला oculomotor. Cranial nerve 5 हैला trigeminal. Next. Cranial nerve 7 हैला facial. 8 हैला vestibulocochlear 9 and 10 हैला important for gag reflex swallowing और airway protection 12 हैला hypoglossal जोड़ा कि हमर टंग रो मूवमेंट बोली देखा जाउछ हैला Norcet एबे आउट टिके और लास्ट क्वेश्चन ता ICP जदी राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जदी बढ़ुची ताहले CPP कैन फॉल बिकॉज़ CPP is equals to MAP minus ICP decorticate posture जोड़ा कि हमरा flexion of the upper limb with extension of the lower limb generally indicates severe brain dysfunction above the brainstem. Decerebrate posture जोड़ा कि extension of the upper and lower limb generally indicate more severe dysfunction involving the brainstem.
RBC in the CSF plus xanthochromia can support the diagnosis of the subarachnoid hemorrhage, particularly when clinical suspicion remains despite initial imaging. Meningitis जोटा कि हमर inflammation of the meninges है ना, जोटा कि classic feature है कोन fever, headache, neck stiffening, altered mental status, although not all features are present in every patient, सब feature not थाई पर present किंतु ए सब general features जोटा हमर देखा जाउछ. Positive Kernig and Brudzinski signs are clinical signs of the meningeal irritation, but their absence does not reliably exclude meningitis. एटा जदि देखा जाउची तो ठीक अछि, न देखा होची बोली कहले मते meningitis हेची परि सेमति किछि माने नै. Meningitis हमर अन्य सब symptoms देखि कि मते हे परिबो. Atonic seizure, sudden loss of the muscle tone ro loss देखा होची atonic seizure रे. Absence seizure, brief impaired awareness, classically lasting seconds and often with staring spell. Status epilepticus is a neurological emergency requiring rapid stabilization of airway, breathing, circulation and seizure control. Romberg test primarily assists the ability to maintain balance. ये जो test है हमारा ability to maintain balance using proprioceptive and vestibular input with visual compensation when appropriate. Next, cerebral dysfunction जोड़ा रे कि हमारे कौन-कौन में अच्छी ataxia, dysmetria, intention tremor and impaired coordination. Normal pupillary light reflex जोड़ा कि हमारे cranial nerve 2 होची afferent और cranial nerve 3 होची efferent. Brown-Sequard syndrome जोड़ा कि classically produce करची ipsilateral motor और proprioception loss with contralateral pain and temperature loss below the lesion. Next, central cord syndrome typically cause greater weakness in the upper extremities than in the lower extremities. Central cord syndrome जदि हेले upper extremities रे अधिक pain देखा जाउची as compared to the lower extremities, often following the cervical spinal cord injury. Yes, tonic-clonic syndrome बोली कहा जाउची. Yes, good afternoon. Cauda equina syndrome, red flags, new urinary retention, incontinence, saddle anesthesia and lower limb neurological deficit require urgent evaluation. It is called Cauda equina syndrome. Neurogenic bladder can occur after the spinal cord injury because disruption of the neural pathways interferes with the normal bladder storage and emptying. Co-case neurogenic bladder ए जगह रे जतरे देखा होची spinal cord injury सहित हमर bladder storage रे problem होची, emptying रे मध्य problem होची. तो with this एबे आसा question solve करिबा हैला, question solve करिबा. टिके क्लास आरंभ होला पूर्व गोटे इंती जस्ट ओवरव्यू करिके देखि देले we can recall everything. तो चलो स्टार्ट करो. Question number 1. A patient with severe traumatic brain injury has a Glasgow Coma Scale score of 8. Which component combination could produce this score? E2 V2 M4, E3 V3 M3, E1 V4 M3, E4 V2 M2. Yes. Good morning, Mamta. Yes. कौन हबो देखि लो. B A yes, ठीक अछि. E रा होची हमर कोन आई ओपनिंग पई बोली, V होची वर्बल रेस्पॉन्स पई बोली और M होची मोटर रेस्पॉन्स पई बोली हैला. तो ए सब गुडा होची त हम क्लिनिकल वैलिडेशन देखुचे हैला. तो जेना बॉडी गिरी हमर ए ऑप्शन दा करेक्ट हे जाउची जगह हैला. ए ऑप्शन दा करेक्ट हे जाउची. वेरी गुड. नेक्स्ट आसो. According to the Monro-Kelly doctrine, an increase in the intracranial volume is initially compensated primarily by increased production of the cerebrospinal fluid, displacement of the CSF and venous blood from the cranial vault, increased cerebral tissue elasticity indefinitely, increased arterial blood volume. Score 8 means coma. Yes. मिसिगिरी तीनटा जगह सब 8 ही जाउची.
हाँ एबे को जो मनरो केली डॉक्ट्राइन देखथिले हमें सेटा कोन हो आंसर It is B. Very good. Very good, Yoshna Lakshmi Sasi. Displacement of the cerebrospinal fluid and venous blood from the cranial body. ऊपर मुझे हमें theory portion पढ़ना बेटो को देखी थी. Next, a patient develop increasing intracranial pressure with change in the vital signs is most consistent with the late manifestation of the Cushing's response. Cushing response पता कौन सी है ना? Hypotension, tachycardia and tachypnea, hypertension, bradycardia and irregular respiration, hypotension, tachycardia and hyperventilation, hypotension, bradycardia and shallow regular breathing. कोड हब Cushing response. Cushing triad रे देखथिले हमें सेडा. Cushing triad देखथिले. और Cushing triad हमर कौन थिला? Hypertension थिला, bradycardia थिला और irregular respirations. Hypertension, bradycardia, irregular respiration. एटा है करेक्ट ऑप्शन है ला बी. Correct option is B. Correct. Next. Yes. A patient with a lesion affecting the dominant cerebral hemisphere is unable to understand spoken or written language but speaks fluently with meaningless sentences. This finding is most consistent with Broca's aphasia, dysarthria, global aphasia, and Rennick's aphasia. Yes. Question number 4. ग्रेजुएशन सच्चे ओएसएससी एग्जाम दे परिबी ना ना तम पई ओएसएससी पई बोली तमे बीएड एडमिशन हेबा दरकार जेमती जागृति हां कोन हो बैडा इट इज रेनिक्स एफिसिया जोडा कि हमर रिसेप्टिव एफिसिया बोली मते कहवा जाउची हैला रिसेप्टिव एफिसिया बोली कहवा जाउची डी हे जबो करेक्ट आंसर डी हे जबो हैला ओके नेक्स्ट which neurological assessment finding is most suggestive of the dysfunction of the cerebellum? Intention, tremor and dysmetria, expressive aphasia, loss of visual fields, decerebrate posturing. Good afternoon Malti. Yes, D Suryakant lock करें ठीक है जेहेतु एटा हमर हमर cerebellum कथा जो पचारि छि cerebellum हमर voluntary movement balance और posture को regulate करछि है ना पोस्चर को रेगुलेट करछि तो से अनुसार जदि हमें कहछि कि सेरेबेलम रे किछि डिसफंक्शन अछि कि सेरेबेलम रे जदि किछि डिसफंक्शन अछि ताहले हमर को पोर्शन टाको से अफेक्ट करिवो ट्रेमर आउ डिस्मेट्रिया देखेबो हला ट्रेमर एंड डिस्मेट्रिया नेक्स्ट a patient with suspected bacterial meningitis is being assessed which clinical finding represents meningeal irritation positive Babinski reflex positive Kernick sign absence of the corneal reflex, presence of the pronator drift. Balance and coordination. It is B, positive Kernick sign. Yes. B, positive Kernick sign. हमारा bacterial meningitis condition रे Kernick sign द्वारा हमें assess देखिए A patient suddenly develops weakness of the right side of the body and inability to speak. Which cerebral hemisphere is most likely affected? Right non-dominant hemisphere, left cerebral hemisphere, cerebellar hemisphere only, occipital lobe of the right hemisphere. Question number 7. जेतु एडी हमर स्पीच कथा कहिछि हला इनएबिलिटी टू स्पीक तो जो साइड ता हम स्पीच पाइ बोली रिस्पांसिबल से साइड ता मोस्ट प्रोबेबली हमरा अफेक्ट देबो तो इट इज लेफ्ट cerebral hemisphere. Left cerebral hemisphere. Next, which cranial nerve is responsible for the afferent limb of the pupillary light reflex? Left cerebral hemisphere. Okay. Which cranial nerve is not responsible for the afferent limb of the pupillary light reflex? Apply कर सकते हो दे भी दो तमर सेरा बट एलिजिबल हेले तमर सेरा माने एप्लीकेबल होबनी हां सी apparent limb of the pupillary light reflex एडा होची हमरा ऑप्टिक नर्व cranial nerve 2 optic nerve cranial nerve 2 आई कथा कहिछि विजन कथा कहिछि एडा
A patient with increased intracranial pressure is receiving nursing care. Which intervention is most appropriate to promote cerebral venous drainage? Maintain the head in a neutral midline position, flex the neck to improve the comfort, keep the patient in a Trendelenburg position, encourage frequent Valsalva maneuvers. We need to maintain the head in a neutral midline position. A midline position रे हमें रखिले कौन करि परिबा? We can prevent jugular vein compression जद्वारा कि आमर ऑप्टिमल फ्लो को फैसिलिटेट कर पारे. ऑप्टिमल फ्लो कैन बी फैसिलिटेटेड है ना. तो ए जगह रे हमर ए सब आईसीपी को जिनस को मेंटेन करे पे बोले ठीक दरकार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A patient develops sudden severe headache, vomiting and neck stiffness. Subarachnoid hemorrhage is suspected. If the initial CT scan is negative but clinical suspension remains high, which investigation may demonstrate xanthochromia? Yes, JV compression. Yes, to prevent the ICP. EEG, lumbar puncture with CSF analysis, carotid Doppler examination, electromyography. Xanthochromia माने कोन? Xanthochromia condition टा कोन? Xanthochromia condition टा होची गोटे yellowish color टा, yellowish discoloration of the cerebrospinal fluid जोटा कि हमर RBC रो destruction जोको देखा जाउची है ना. Yellowish discoloration of the cerebrospinal fluid caused due to breakdown of RBC. Caused due to the breakdown of RBC. Correct? So, idea amar kon hijiba question number 10. It is lumbar puncture with the CSF analysis. Lumbar puncture with CSF analysis. Next. Which finding is most characteristic of decorticate posturing, extension and pronation of the upper limb with plantar flexion, flexion of upper extremities towards the chest with extension of the lower extremities, flexity of all extremities, alternating flexion and extension movements of both the legs. Question number 11. Yes, it is B, flexion of the upper extremities towards the chest with the extension of the lower extremities. Next question. In a patient with suspected acute ischemic stroke, the most important initial investigation for differentiating ischemic stroke from intracranial hemorrhage is non-contrast CT scan of the head, EEG, lumbar puncture, or skull X-ray. Question number 12. Acute stroke management time बोले first vital step है हमारा non-contrast CT scan. Non-contrast CT scan एडा पाइन बोले हमारा acute ischemic stroke पाइन बोले एडा हला हमारा first vital sign है ना, first vital जिनसे जोड़ा कि हमको देखना पड़ता. तो non-contrast CT scan of the head. Next, a patient has ptosis, a dilated non-reactive pupil and eye positioned down and out. Which cranial nerve is most likely involved? Optic nerve, facial nerve, oculomotor nerve, not trigeminal nerve. एरिया हमरो 3 नंबर क्रेनियल नर्व टा हमरो जनरली अफेक्टेड हे जाउची जोटा की ऑक्यूलोमोटर नर्व को इंडिकेट करछ. क्रेनियल नर्व 3 हला. यस. नेक्स्ट as a question number 14. A patient with myasthenia gravis जोड़े को autoimmune disorder ना develop increasing respiratory difficulty and profound muscle weakness. Which assessment is the highest priority? Measurement of the abdominal girth, assessment of respiratory muscle function and vital capacity, assessment of the bowel sounds, measurement of the peripheral edema. Question number 14. It is assessment of the respiratory muscle function and the vital capacity. Assessment of the respiratory muscle function and vital capacity. Next.
क्वेश्चन नंबर 14 ହେଇଗଲା 15 which neurotransmitter is primarily deficient in the Parkinson's disease Parkinson's disease रे कोटा हमरा affected था dopamine acetylcholine serotonin gamma aminobutyric acid एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ना है ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना जोटा कि हमरा को रिसेप्टर्स उडा सब अफेक्ट होतला डोपामाइन को एरिया रे सब्सटेंशिया नियाग्रा एरिया रे हमरा एटा जनरली अफेक्टेड होतला सब्सटेंशिया नियाग्रा एरिया रे हमरा अफेक्टेड होतला नेक्स्ट a patient with a spinal cord injury at the level of T4 develops severe hypertension headache flushing above the level of injury and sweating the nurse should suspect neurogenic shock spinal shock autonomic dysreflexia myasthenic crisis question number 16 T6 level ऊपर है T6 level spinal cord injury at the level of T4 कहिछि अच्छा at the level of T4 कहिछि तो develop severe hypertension headache flushing above the level of injury flushing at the level of injury और sweating सहित तो कौन एई जगह रे हम शॉक करिवा C B कौन हिंदी A एते कौन वेराइटी ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया होबा आंसर है ना ये हमर जनरली बहुत अधिक वैसा कंस्ट्रक्शन है हाइपरटेंशन बिलो द इंजरी ब्रेन अटेम्प्ट एडा सब करूची है फ्लशिंग और स्वेटिंग एवडा का सब हमर कोन अबव द लेवल होची तो ए जगह रे ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया विल बी द करेक्ट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर है ना सी विल बी द करेक्ट आंसर यस सी होबो शायद यस सी ही होबो काटू ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया विल बी द करेक्ट आंसर यस है ना एगुडा का केस रे एगुडा का केस रे हमरो जनरली कोन ना T6 लेवल हमरो अफेक्ट होची ठीक अछि हां देखो न्यूरोजेनिक शॉक स्पाइनल शॉक एवडा को सब हम हाइपोटेंशन करोचे हाइपरटेंशन ना एडी हमर हाइपरटेंशन कथरा मेंशन होची आ माइस्थेनिक क्राइसिस ता जोडा सेडा हमरो हाइपर रिएक्टिव स्पाइनल ट्रॉमा देखा जाउची हैला हाइपर रिएक्टिव स्पाइनल ट्रॉमा देखा जाउची तो एठी जेहेतु हमर न्यूरोजेनिक शॉक और स्पाइनल शॉक रे हाइपोटेंशन जिनसरा देखा जाउची किंतु एडी मेंशन कोन हिची हाइपरटेंशन मेंशन हिची तो एटा हमर ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया है ना सी नेक्स्ट which finding best differentiate neurogenic shock from spinal shock एबे को neurogenic आउ spinal shock ता हमर केते बडे अफेक्ट होची देखो presence of transient loss of reflex activity hypotension associated with bradycardia due to the loss of sympathetic tone flaccid paralysis below the level of injury loss of bowel and bladder reflexes B yes हैला एबे बुझा पड़ला ए दीरे जगह हाइपोटेंशन तो होउची किंतु हाइपोटेंशन आ ब्रैडिकार्डिया जिनसटा तो होउची किंतु हमर जो न्यूरोजेनिक शॉक रे लॉस ऑफ सिंपैथिक टोन देखा जिवो व्हाइल हमर स्पाइनल शॉक रे कार लॉस देखा जिवो रिफ्लेक्स सेंसरी मोटर ए सब रिफ्लेक्सेस उडा हम सब अफेक्टेड हि जिवो बाकी दीरे जगह कंडीशन रे हमर हाइपोटेंशन एसोसिएटेड विथ ब्रैडिकार्डिया रहिबो हैला बी विल बी द करेक्ट आंसर Next, a patient with high cervical spinal cord injury develops respiratory insufficiency. This function of which structure is most directly responsible? Phrenic nerve arising primarily from C3 to C5, sciatic nerve, femoral nerve, obturator nerve. Obturator nerve. Question number 18. Yes. It is phrenic nerve arising primarily from the C3 to C5 जो diaphragm nerve टा diaphragm muscle सहित जो associated ही रही जो nerve टा हैला phrenic muscle सहित तो ये ही जो हमरा कोन ना option number A will be the correct answer next a patient experiences sudden onset of unilateral facial weakness involving both the upper and lower face which condition is most consistent with this presentation upper motor neuron lesion Bell's palsy involving the facial nerve cerebellar infarction isolated hypoglossal nerve lesion. Yes, question number 19. एरिया हमर जो फेशियल वीकनेस एवडा सब देखा होचे क्रेनियल नर्व 7 हमर अफेक्टेड होचे क्रेनियल नर्व 7 हमर अफेक्टेड होचे जोडे कि हमर फेशियल नर्व
तो एरिया हमारा Bell's palsy involving the facial nerve. Bell's palsy involving the facial nerve will be the correct answer. Next question. During assessment of a comatose patient, cold caloric stimulation of the ear produces no eye movement. In an appropriate clinical context, this finding may indicate dysfunction of peripheral auditory structures only, vestibulo-ocular pathways involving the brainstem, frontal lobe speech areas only, corticospinal pathways alone. Question number 20. Yes, facial nerve is affected. It is B. B. Vestibulo-ocular pathway involving the brainstem will be the correct answer. है ना? Ear कथा कहिछि eye movement किछि हमर affect देखिएनि. Vestibulo-ocular pathway टा vestibulo-ocular pathway हमर ocular pathway हमर affect होबो. Which seizure type is characterized by a sudden brief loss of the muscle tone? Muscle tone रो हमर जो loss देखा जाउछि को seizure रे देखा जाउछि? Atonic seizure, absent seizure, myoclonic seizure ना focal aware seizure. एडा को हमर कहै जाउछि अटोनिक सीजर जोडा कि हमर मसल टोन रे लॉस देखा होछि एडा को हमर ड्रॉप सीजर्स बोली मते कहै जाउछि सडन मसल रो लॉस होई जबा जगो माने पड़ी जानती है ना पड़ी जानती तो सेटा ड्रॉप सीजर्स बोली मते कहै जाउछि जेबा नेक्स्ट 21 हे गेला ए नेक्स्ट 22 a patient receiving phenatonic therapy developed gingival enlargement, ataxia, and nystagmus. Which nursing interpretation is most appropriate? These findings are unrelated to the phenytoin therapy. The patient may be experiencing manifestations associated with phenytoin toxicity. The finding indicate therapeutic failure only. The patient has developed autonomic dysreflexia. Loss of the muscle tone, yes. Clonic है gently movement, हाँ yes. Question number 22. It is B. B. Patient may be experiencing manifestation associated with the phenytoin toxicity. जोटा कि हमर ए सब जिंस associated हेगरी phenytoin therapy देला टाइम रे तार toxicity जो ए सब symptoms गुडा देखा जाई पारे. Next, which clinical feature is most characteristic of multiple sclerosis? Progressive loss of lower motor neuron without the remission, demyelination within the central nervous system with lesions disseminated in time and space, degeneration limited exclusively to the peripheral sensory nerves, selective destruction of the neuromuscular junction by the acetyl choline. Question number 23. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जोड़ा कि होचे गोटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टा एडा रे हमर डीमाइलिनेशन हो जाउची सीएनएस रा न्यूरॉन्स गुडा करे जहा द्वारा कि लेजन्स डिसेमिनेटेड विथ द टाइम एंड स्पेस ए सब जिंस हमर देखा जाउची बी सीएनएस इज अफेक्टेड नेक्स्ट a patient with Guillain-Barré syndrome require close respiratory monitoring primarily because the disease may cause increased intracranial pressure, sudden cerebral hemorrhage, progressive weakness involving the respiratory muscles, excessive dopamine production. Question number 24. 24 है ना progressive weakness involving the respiratory muscles. Our respiratory muscles with the diaphragm, our internal intercostal muscles are affected. Internal intercostal muscles are affected. है ना? C. 25. A patient has a positive Romberg test but demonstrate relatively normal coordination when visual input is available. This finding most strongly suggests impairment of primary motor cortex function, extrapyramidal pathways, visual cortex only, proprioceptive or vestibular sensory pathways. Yes, ascending weakness, ascending paralysis मध्ये आम्हाला से जागे रे देखा जाउछ. Correct. अर्पिता. Question number 25. B.
D. Yes, mammally. Proprioceptive or vestibular sensory pathway amar ei jaga re most suggestive impairment ta mane ei condition ne amar ei jaga da impaired hichi boli amar most suggestive. Next, a patient with suspected increased intracranial pressure suddenly develop a unilateral dilated non-reactive pupil. This finding most strongly suggests compression of which cranial nerve? Oculomotor nerve CN3, cranial nerve 3, optic nerve CN2, facial nerve CN7, trigeminal nerve CN5. It is A. Very good. It is oculomotor nerve, cranial nerve 3. ए जगह रे हमर कोन pupil non reactive unilateral dilated intracranial pressure हमर सडनली जो डेवलप हेगरी ये सब कंडीशन देखा जाउची ता माने हमर ए नर्व ता अफेक्टेड हेची ए जगह रे हमर कंप्रेशन देखा जाउची सेति पय बोली ये सब डेफिशिएंसी देखा जाउची. A patient with a lesion in the left occipital lobe is most likely to develop left sided motor weakness, right homonymous hemianopia, expressive aphasia, loss of pain sensation on the left side. On the left side. Yes, Sushmita, Riyansh, Sudipta. It is B. Right homonymous hemianopia. Hala? Right homonymous hemianopia. Next, question number 28. Which finding is most characteristic of a lower motor neuron lesion? Spasticity with hyperreflexia, increased muscle tone with clonus, laxity, muscle atrophy and fasciculations, positive Babinski sign. Positive Babinski sign. 28. जरा हमर LMN lower motor neuron टा हमर affected हे जाउची से जगह रे तीनटा जिंस reduced muscle tone, severe wasting आ muscle twitches देखा जाउची हैला कोन हला तो severe muscle weakness बा हमर जते बेले reduced muscle tone laxity रो माने हला reduced muscle tone, muscle atrophy रो माने हला severe wasting आउ fasciculation रो माने हला muscle twitches ये सब कंडीशन हमर देखा जाउची ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 28 हला ऑप्शन नंबर सी. Next, a patient with a pituitary macroadenoma report difficulty seeing object on both outer sides of the visual field. This defect is known as homonymous hemianopia, quadranotopia, central scotoma, bitemporal hemianopia. Question number 29. एरागी जता हमर ऑप्टिक कैरिज्मा हमर कंप्रेशन हे जाउची ऑप्टिक कैरिज्मा कंप्रेशन हे जाउची से जगह रे बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया हमर देखा जाउची हैला. नेक्स्ट, which neurotransmitter is primarily released at the neuromuscular junction to initiate the skeletal muscle contraction? Dopamine, acetylcholine, GABA, norepinephrine. जोरा कि हमर जनरल सबडो क्वेश्चन ना एडा होची acetylcholine हैला. एडा होची acetylcholine न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पई बोली जो रिसेप्टर ता अछि सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर ता सेडा होची acetylcholine. एडा हमर गोटे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ता. नेक्स्ट, a patient present with resting tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability. The primary pathological change involved degeneration of neurons in the substantia nigra, hippocampus, medulla oblongata and occipital cortex. Bradykinesia, rigidity, postural instability, tremor ए सब जिंस जे देखा जाउची सबस्टेंशिया निग्रा रे जते बेले हमर न्यूरोनल डिजेनरेशन देखा जाउची से केस रे हमर ए सब कंडीशंस गुडा प्रेजेंट करबो गोटे पेशेंट हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन, which finding is most suggestive of temporal lobe seizure activity? Sudden loss of the postural tone without warning, brief staring episode lasting a few seconds, complex automastisms associated with altered awareness, sudden generalized muscle rigidity only. Question number 32. It is complex automastism associated with the altered awareness. ए जगह हमर temporal lobe seizure जोगो ए जिंसला देखा जाउछ. A patient is admitted with status epilepticus
Which nursing priority should be addressed first? Establish and maintain airway and oxygenation, obtain a detailed dietary history, assess bowel elimination pattern, perform a complete neurological teaching session. যেতবেলে আমি এবিসি দেখুছে এয়ারওয়ে ব্রিদিং আউট एबीसी फ्रेमवर्क तक आम देखुचे है ना एबीसी फ्रेमवर्क को आम देखुचे से केस रे आम वी नीड टू कौन करबा यस वी नीड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन वेरी गुड ठीक अछि एपिलेप्टिकस जेहेतु हमर रेस्पिरेशन को मध्ये अफेक्ट करूची तो सेते बोली एयरवे और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस तक आम फर्स्ट एस्टैब्लिश करी तक मेंटेन करबा नेक्स्ट a patient with a cerebrovascular accident has dysphagia. Before administering oral medications, the nurse should first place the patient in a supine position, perform or verify a swallowing assessment, encourage rapid fluid intake, administer medication with a large volume of water. Question number 34. जेहेतु आमर जो सीबीए cerebrovascular accident देखा जाइछि और dysphagia देखा जाइछि सेति पई बोली एडा आमर सीरियस केस अछि कहार आमर निमोनिया को मध्ये से आमर लीड करि परिबो तो से केस रे आमे स्वालो स्क्रीन टा को देखियो पड़िबो फर्स्ट कि स्वालोइंग असेसमेंट से प्रॉपर्ली स्वालो करि परछु ना वी नीड टू परफॉर्म एंड वेरीफाई द स्वालोइंग असेसमेंट प्रॉपर्ली स्वालोइंग होछि ना यस मामली स्थिति which clinical manifestation is most characteristic of Huntington's disease resting tremor and pill rolling movement chloroform movement with progressive cognitive and behavioral changes ascending symmetrical paralysis fluctuating muscle weakness improved by rest only it will be chloroform movement with progressive cognitive and behavioral changes. Yes. Next. A patient with a lesion involving the hypothalamus may demonstrate disturbances primarily related to hearing and balance, voluntary motor coordination, homeostasis, temperature and endocrine regulation, visual interpretation only. It is homeostasis, temperature and endocrine regulation. Correct. Yes. B. C हम है ना hypothalamus जेहेतु हमर homeostasis को maintain करछि ता माने ए जगह रे जता बळे हमर disturbance रहउछि ए हमर temperature endocrine regulation ए सब जिंस affect होछि जेहेतु हमर hypothalamus ता होछि hormonal regulation पई बोली हमर master gland बोली कहल जाउछि ता माने सेरा रे जता बळे हमर disturbance हबो endocrine regulation मध्ये हमर disturb हे छै next which component of the Glasgow Coma Scale assesses the patient's ability to follow commands eye opening response verbal response motor response pupillary response it is amar kon roji eye opening response verbal response motor response सेडा रे हमर 6 points मिलछि है ना 6 points मिलछि तो सेति में बोली जो फॉलो कमांड्स पई बोली हमर मोटर रिस्पांस तो देखा जाउछि जोडा कि हमर 6 points है ना 6 points yes see next a patient with a cervical spinal cord injury has lost voluntary movement below the level of the injury but retains some sensory function this pattern is most consistent with complete spinal cord injury incomplete spinal cord injury brainstem death peripheral neuropathy it is the incomplete spinal cord injury वो जगह रही थी below the level of injury but retain some sensory function किछि sensory functions अछि हैला किंतु spinal cord तळगु voluntary movement तारो सेना जगह रे लॉस हि जिबा जगु ए जगह रे इंजुरी देखा जाउछि it is incomplete spinal cord injury next in a patient with anterior cord syndrome which function is relatively more likely to be preserved pain and temperature sensation motor function below the lesion vibration and proprioception voluntary bladder control question number 39 it is C vibration and proprioception है ना anterior cord spinal cord injury देखा जाइछि then it will be vibration and proprioception next yes Lakshmi a patient develops sudden vertigo dysarthria ataxia and nystagmus which vascular territory should raise concern posterior circulation involving the vertebrobasilar system anterior cerebral artery only superficial temporal artery external carotid circulation question number 40 dysarthria माने हला कोन dysarthria माने हला blood speech clear नथिबो हैना ataxia माने coordination नाही और nystagmus माने हला involuntary eye movement ए सब कंडीशन और vertigo जोडा रे कि हमर माने पैचेस उडा देखा जाउछि
तो ए जगह रे हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो करेक्ट ऑप्शन हे जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्वॉल्विंग द वर्टेब्रस बैसिलर सिस्टम एटा हमर अफेक्ट हे हैला ए जिंसरा अफेक्ट हे हैला तो 40 हे गला ए करेक्ट 41 which finding is most consistent with normal pressure hydrocephalus fever neck rigidity and photophobia gait disturbance cognitive decline and urinary incontinence resting tremor rigidity and masked facies ascending paralysis with areflexia ascending paralysis with areflexia question number 41 जोटा कि क्लिनिकल ट्राइट ता देखुतिले आमे निमोनिकल बेट वैकी एंड वॉबली हैला नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कंडीशन टा को हमर देखौची व्हिच डिनोट्स गेट डिस्टर्बेंस कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हैला एटा हमर को जिंस को आइडेंटिफाई करची नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोएन्सेफेलस NPH हैला नेक्स्ट A patient with a lesion at the right parietal lobe is most likely to demonstrate Broca's aphasia, right-sided visual loss only, left-sided neglect or impaired spatial awareness, loss of hearing in both the ears. Question number 42. It is left-sided neglect or impaired spatial awareness. C. Yes. Rizwana, Vanita, Manisha, Cartoon, Vinod Das. Yes, Sthiti Prajna. Correct. Next, as question number 43. Which assessment finding is most characteristic of brainstem dysfunction in deeply unconscious patient? Preservation of higher intellectual functions only, abnormalities in the pupillary and brainstem reflexes, isolated impairment of handwriting, increased ability to follow commands. It is abnormalities in the pupillary and brainstem reflexes. जेहेतु ए जगह हमर कोन अनकॉन्शियस पेशेंट देखा जाउचंती characteristic of brainstem dysfunction a condition रे हमर देख ए assessment ता finding आसीबो next a patient with suspected cauda equina syndrome report new urinary retention and saddle sensory loss the nurse should recognize this as a non urgent manifestation of peripheral neuropathy an expected finding of uncomplicated migraine a potential neurological emergency requiring urgent evaluation a typical manifestation of the Parkinson's disease कोडा इक्विना सिंड्रोम जोडरे कि हमरो नर्व रूट रो कंप्रेशन हे जाउची बिलो द स्पाइन हैला नर्व रूट रो कंप्रेशन हे जाउची बिलो द स्पाइन तो ए जगह रे हमर कोन कंडीशन ता देखा जिवो कोन कंडीशन ता को से रिकॉग्नाइज करिवो जते बेले कोटी न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ता न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन दा हैला न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इमरजेंसी एटा आउ एडी अर्जेंट इवैल्यूएशन ता ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर which statement best describes spasticity a velocity dependent increase in muscle tone associated with upper motor neuron dysfunction complete absence of muscle tone due to peripheral nerve injury intermittent involuntary contraction occurring only during the sleep progressive muscle weakness caused exclusively by neuromuscular junction disease कोन हे जेबो spasticity को condition ता हमर describe करूची a velocity dependent increase in the muscle tone associated with the upper motor neuron UMN dysfunction ता देखा जाउची हैला question number 45 है option number A answer next question number 46 a patient with a lesion affecting the medulla oblongata is at a greatest immediate risk of the dysfunction of medulla oblongata हमरा कोन condition को माने को condition को से हम regulate करे visual interpretation hearing perception voluntary fine motor planning respiration and cardiovascular regulation जेतो हमर medulla oblongata गोटे vital autonomic center हमर जे कि हमर blood pressure heart rate आउ जति कि भी सब हमरो जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशंस उडा को ए सब इन्वॉल्युंटरी एक्टिविटी उडा सब रेगुलेट करे तो जते बे मेडुला ऑब्लोंगोटा अफेक्ट हे जिवो ताले हमर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन ता अफेक्ट होबो हैला यस नेक्स्ट which finding is most consistent with the trigeminal neuralgia progressive bilateral paralysis of the facial muscles sudden recurrent episodes of severe facial pain along with trigeminal nerve distribution loss of consciousness with generalized convulsions progressive ascending weakness of the lower limbs कौन हलाइडी trigeminal neuralgia जोटा कि हमरो excruciating shock like pain हमरो जो देखा जाउची जते बेले हमरो fifth cranial nerve बा trigeminal nerve ता affect होची it leads to sudden recurrent episode of the facial pain along with the trigeminal nerve जोटा कि हला CN5 distribution next
A patient with suspected transient ischemia attack TIA has complete resolution of neurological symptoms. Which statement is most appropriate? Resolution of symptoms eliminate the future risk of the stroke. No further neurological evaluation is necessary. TIA can be a warning sign of an impending ischemic stroke. TIA is always results from intracranial hemorrhage. Yes, 48. It can be a warning sign for an impending ischemic stroke. ये जो condition ला हमारे उड़े warning है पारे ischemic stroke. Next, a patient developed weakness predominantly affecting the upper limb more than the lower limb following a cervical spinal cord injury. This presentation is most characteristic of Brown-Sequard syndrome, central cord syndrome, anterior cord syndrome, conus medullaris syndrome. कहारो माने most characteristic sign it is central cord system रो central cord system रो most characteristic sign. ठीक? Yes. Next, question number 50. During neurological assessment, the patient is asked to identify an object placed in the hand with eyes closed. Inability to recognize the object despite intact primary sensation is called dysgraphia, apraxia, agnosia, asterognosis. एक सबूड़ा question रा मते ए जो question रा एरा ए question रा answer का मते comment section रे लिखी कहइबो ता सांगेरी जोटा तो करेक्ट आंसर हेतिबो तार explanation राइट हे गला किंतु जो अन्य जो सब जगह हमर इनकरेक्ट आंसर सुला गो अछि जो इनकरेक्ट आंसर सुला गो अछि ताहर मध्ये एक्सप्लेनेशन मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि होइबो ठीक अछि तो आज रो क्लास एतिके ପାଇଁ बोली थिला ए 50 टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिले along with the theory coming session रे we will be discussing about the lab values the lab value ऊपर मध्ये आगुटे सेशन soon after this session ends आउथरे पुनी आगुटे सेशन स्टार्ट होबो तो समस्त सेठी मध्ये जॉइन करिवो आ एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो ठीक अछि अब ए क्वेश्चन रो आंसर मते लाइव सरला पले कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबो थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू सून जय जगन्नाथ।